अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS कैफे चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इस्लामिक स्टडीज का या इस्लामियात का यह लेक्चर सीरीज हमारा कंटिन्यू है और आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं पार्ट 2 है बिलीफ इन आखिरत, हियर इन आफ्टर एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ये पार्ट 2 है इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज का। CSS PMS या किसी भी रिटन एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल, BSc इस्लामियात, BSc इस्लामिक स्टडीज, MSc MS इस्लामियात या MA इस्लामियात के लिए भी ये आपको काम आ सकता है। CSS PMS गेटवे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आपने बिलीव इन आखिरत, हेयरआफ्टर एंड इट्स इम्पैक्ट्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। आप उसको काइंडली विजिट कीजिए, देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो इस टॉपिक को ज्यादा आसानी से समझने के लिए। उसके बाद आता है कि द नीड ऑफ दिस बिलीफ। अब इस बिलीफ की जरूरत क्यों है कि भाई कि हेयर आफ्टर की लाइफ की या कयामत के दिन की जरूरत क्यों है। बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एवरी प्रॉफिट आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू बिलीव in it in the same way as the last prophet Muhammad, peace be upon him, has asked us to do. This has always been an essential condition of being Muslim. All prophets have categorically declared that one disbelieves in it or casts doubt on it, it is as a kafir. This is so because denial of life after death makes all other beliefs meaningless. This denial also the very sanction for good life and man is driven to life of ignorance and disbelief. अब इसके लिए यह है कि ये इसकी जरूरत क्यों है। हर नबी ने, जो भी नबी अल्लाह ने भेजे हैं, सब ने यही कहा है कि भाई आपको लाइफ आफ्टर डेथ पे जो है कि यकीन होना चाहिए, कयामत के दिन पे यकीन होना चाहिए। और यही काम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अगर कोई शख्स इसमें से रत्ती बराबर भी डाउट करता है तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, उसका वो काफिर या मुर्तद कहा जा सकता है उसे, और वो इस्लाम से बाहर चला जाता है। इम्पैक्ट्स ऑफ बिलीफ इन हेयरआफ्टर ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। All injections of Holy Quran have tremendous effect on human society. Similarly, the faith in Akhirat has also great many effects on the lives of believers, not only individually but also collectively. Following is the disclosures. अब वो फॉलोइंग ये है कि इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। अब इंडिविजुअल की लाइफ में जो इम्पैक्ट आता है वो क्या है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल, a person who believes in resurrection and hereafter is always imbued with a sense of responsibility and accountability. अब जो इंसान क़यामत के दिन पे यकीन रखता है तो उसको जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है और वो अकाउंटेबल भी होता है, और वो डरता है किसी भी गुनाह करने से कि भाई आज ये कर लूंगा लेकिन क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। किसी का वो हक नहीं मारेगा, किसी के साथ वो नाहक नहीं करेगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, ना वो रिश्वत लेगा, ना वो करप्शन की तरफ सोचेगा, ना वो जिना की तरफ जाएगा, ना वो शराब खोरी करेगा। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में आएंगी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको आएगी। He believes that he is accountable for all his actions before God and becomes God-fearing person. Thus, belief in the last judgment makes him a responsible member of society. अब ये जो बिलीव है उसको अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा कर देता है कि भाई मुझे अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है, और इसी वजह से वो सोसाइटी में एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बन के रहता है या रेस्पॉन्सिबल हिस्सा होता है सोसाइटी का। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिवॉर्ड इन हेयर आफ्टर। अब उसके बाद उम्मीद क्या है। बिलीवर इन आफ्टर लाइफ अडॉप्ट्स अ सेल्फलेस एटीट्यूड एज ही expects reward in other existence. Even if he receives reward of chastisement in the world, he believes that ultimate reward and punishments would be handed down in the hereafter. अब वो रिवार्ड के आसरे में होता है, उम्मीद लगाए बैठा होता है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छा काम करूंगा,
नेकियां करके जाऊंगा तो मुझे क़यामत के दिन जो है कि अल्लाह पाक मुझे उसका रिवार्ड देंगे, उसका इनाम देंगे और इनामों से नवाजेंगे। तो इस वजह से वो बुरे कामों से रुकता है। अगर वो बुरे काम करेगा तो उसकी सजा भी उसे यहां भी मिलेगी, वहां भी मिलेगी। अच्छे काम करेगा, उसका रिवार्ड यहां पे भी मिलेगा और आखिरत में भी उससे रिवार्ड मिलेगा। Humility. A person believing in the day of judgment will be neither arrogant nor be rebellious, and on the whole will be a server of mankind, drawing bliss from his virtuous deeds. Virtue and piety. A person believing in the hereafter will regard virtue as necessary as water or food for this life. Rather, he will identify life with virtue. वो अच्छाई को बहुत अहमियत देगा. This is why Islam attaches importance to the belief in the hereafter. A moral code and legal system have been wrought to support this belief. Fear Allah and know what you have to go to Him. उसके बाद इम्पैक्ट्स में आता है स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग. अब सैक्रिफाइसिंग का स्पिरिट आता है. This belief safeguards mankind from tyranny and lawlessness, inspires him to protect his society at the risk of his life, for which recompenses has been promised in the coming life. उसके बाद पेशेंस आता है. पेशेंस भी ये सिखाता है. This faith enables us to bear trials and tribulations with the patience and forbearance, so that the man emerges from such trials and burnished like gold emerging from the furnace. Courage. उसके बाद courage भी आता है. Belief in the hereafter inculcates courage and fearlessness in man, so that they fear none but Allah. Human progress. This faith has been a solace in the sorest misery suffered by man, has taught them to be upright and thus opened the path of human progress. Altruism. This belief has nurtured the spirit of sacrificing in man and has drawn attention to remove poverty from the human society and has shown the futility undue permanency. अच्छा, उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी आता है ना. तो उसमें आइडियल सोसाइटी होती है. फेथ इन द आखिरत मेक्स द सोसाइटी आइडियल. इट पुट्स द होल सोसाइटी ऑन राइट पाथ. Society is the name of collectivity of people, and when everyone in the society leads a virtuous and perfect life, the mischief will disappear, and automatically an ideal virtuous society will emerge. जब इंसान आखिरत पे यकीन रखता है तो उसमें बुराइयां खत्म हो जाती हैं उस सोसाइटी में, और वो एक अच्छी सोसाइटी बन जाती है. और इसीलिए एक जो है कि भलाई वाली सोसाइटी इमर्ज कर जाती है. स्पिरिट ऑफ जेनरसिटी. उसके बाद जेनरसिटी भी पैदा होती है. इट आल्सो क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ जेनरसिटी अमंग द बिलीवर्स, बिकॉज अ बिलीवर नोज दैट दिस वर्ल्ड is temporary and so are the things of this universe. Therefore, he will not love wealth and things of this world to extent to bar him from good deeds. He spends his life in this way of God in order to please God. He knows that one day he will die and his wealth will be left in this world. He will have to travel to the next world with empty hand from wealth. Only wealth of good deeds will help him. Hence he becomes generous. अब जिस इंसान को ये यकीन हो जाए कि यहाँ से मुझे एक दिन चला जाना है, मुझे अगली दुनिया में जाना है, तो वहां पे जो है कि मेरी ये इस दुनिया की मुझे माल और मिल के दौलत काम नहीं आएगी. वहां पे जो दौलत काम आएगी, मुझे वो दौलत होगी मेरी अपने अमाल की, अपने अच्छाइयों की. तो इस वजह से वो इस दुनिया की जो माल और दौलत है उससे उसकी मोहब्बत कम हो जाती है और वो उसको गरीबों में और अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर देता है. द स्पिरिट ऑफ वर्शिप.
The very purpose of the life of Muslim is to worship God as mentioned in the Holy Quran says, and I have created jinns and human beings to worship me. Surah Al-Siyar. The faith in the Akhirat creates in him this sense of worship and purpose of his life in this world. The Holy Quran describes that the creation of man is not purposeless, but mankind are created with a specific purpose, and that purpose is to worship Allah. The Holy Quran says any person who hopes to meet his God should do deeds and should not make anyone partner in his worship. Surah Al-Kahf. अच्छा, उसके बाद कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड भी इसका इम्पैक्ट है. The believer in the hereafter is imbued with the incentives to render meritorious services for the welfare of his brethren in faith and humanity at large. अब ये जो लोग हैं जो क़यामत के दिन पे यकीन रखता है, तो उसको ये होता है कि भाई मैं अगर यहाँ पे अच्छे काम करूंगा अपने भाई मुसलमानों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, तो उसका मुझे अवार्ड जो है कि आखिरत में जरूर मिलेगा. तो उस वजह से ये कोऑपरेशन और ब्रदरहुड को भी जो है कि हथी देता है, उसको भी एम्पावर करता है. थैंक यू वेरी मच. ये आपको लाइफ हेयर आफ्टर यानी क़यामत के दिन का, डे ऑफ जजमेंट का जो है कि पार्ट 2 आपकी खिदमत में रखा है. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा. दुआ में याद. अल्लाह हाफिज.